सो बेसिकली ट्रैफिक बहुत था, इसके लिए मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ. सो हियर आई वॉज टेलिंग यू ऑल दैट आई हैव डिसाइडेड टू स्पेंड दिस डे विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ मैं मेट्रो घूमने वाली थी. एंड आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम माई हाउस टू मीट हिम. Wow! घेतलं. हाय, हूज दिस? दिस इज नरेश. आणि आम्ही आता भटकायला निघालेलो आहे. ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज ऑल्सो अ सबस्क्रायबर ऑफ माइन, इफ आय एम नॉट रॉंग. हॅव यू सबस्क्राईब्ड? येस. ओके, गुड. सो आत्ता कुठे आपण? पाताळेश्वर मंदिर. आम्ही इकडे आलो फिरायला आणि आता आमचा प्लॅन असा आहे की आपण मेट्रोमध्ये फिरायला जाणार आहे. कुठे कुठे फिरवणार आहेस मला? मेट्रो, सिव्हिल कोर्ट, ओके, PCMC, ओके, बॅक टू पॅव्हलियन. बॅक. आणि मग त्याच्यानंतर लंच, त्याच्यानंतर शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग आणि देन बॅक टू होम. सो असा आमचा फन डे आहे. हॅलो, खाली लक्ष दे. ये वेलकम वेलकम वेलकम. सो दिस इज द मेट्रो स्टेशन. कुठे होतं आपण? डेक्कन. ये आता आपण चाललोय तिकीट्स काउंटरकडे. सो दिस इज द मेट्रो स्टेशन ॲट डेक्कन ऑन अ संडे विच इज अ very empty. We are waiting for our metro. There is my friend Naresh sitting. Hi. So पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे. That's the crowd at the civil court metro station. We'll be going down by the lift from over there. Then we'll catch our next metro. We are 6 stations away from the CMC and this is the view. We have stopped abruptly. I don't know why. मोपोली. Okay. ही ॲक्च्युअल ग्रीनरी वाटते की नाही? We have reached the PCMC metro station and you can see the crowd here who's on the other side of the other side platform. बघू ना काय येतं. On our way back to Deccan, the metro journey ends here. So this was my mini vlog which I shot जितना हो पाया मुझसे बिकॉज भीड़ बहुत थी मेट्रो में. कोई पॉइंट्स पे कहीं पॉसिबल नहीं था शूट करना वगैरह. सो आफ्टर वी फिनिश्ड आवर मेट्रो राइड. डेक्कन पे उतरे हम. उसके बाद वी हैड कॉफ़ी एंड देन अपने अपने घर चले गए. इन द मीन वाइल आई शॉप्ड अ लिटिल बिट. वो मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ. आई गॉट 2 books फ्रॉम लाइक द स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ पे ऐसे फुटपाथ पे बैठते हैं बुक्स बेचने के लिए. वन ऑफ इट इज़ दिस, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय यान येजर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड द सेकेंड वन इज़ टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स एटॉमिक हैबिट्स. ये इस बुक के बारे में काफ़ी सुना था मैंने. तो फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट. इट्स बाय जेम्स क्लियर. सो या सो बोथ ऑफ दीज बुक कॉस्ट में ₹250 ईच. उसके बाद विंटर सीजन है तो आई गॉट
विंटर बूट्स, विंटर हाउस बूट्स, एक्चुअली हाउस सॉक्स आप घर के अंदर पहन सकते हो. सो दीज सॉक्स कॉस्ट मी अराउंड लाइक 150-160 रुपीज़ पर पेयर. 3-4 उठा के लेके आई मैं. मे बी आई शेयर इट विथ माई मॉम, माई बुआ, आई डोंट नो. सो द फर्स्ट वन अमंगस्ट देम इज़ दिस प्रिटी सिंपल ब्लैक. यहाँ पे ऐसे उसके एंकल्स दिए हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है हैप्पी और स्माइली है उसके ऊपर. द नेक्स्ट पेयर इज़ दिस वन. I don't know, I'll keep it or I'll give to my mom or to my bua, I don't know, but it's a cute color. Then I got this one. वो है उसके सामने अच्छा सा cute सा. And the fourth pair that I got is this one. This one probably I'll keep for myself because you know polka dots, animal prints and all that. They look very pretty and cute. So, and the last thing that I absolutely must show you all is something that my friend Naresh gifted me, जिसको आपने आज vlog में देखा मेरे साथ घूमते हुए. Basically उसका भी पहला टाइम था, मेरा भी पहला टाइम था घूमने का, but he was like, let me take you around. He just wanted to help out. So yeah, we had a lot of fun as he gifted me this bell. है ये meditation bell है, bowl है, I do not know what it is, but it's really cute and it's good for like positive energy, positive vibes and all that. And they've given this double-sided sticker so that you can stick it on the wall or something like that. And another thing that he gifted me is again absolutely cute, but I know it must be a bit expensive. कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत उसको बोल रही थी कि मत मत मत, but वो उसने सुना ही नहीं. Is this hoodie. तो ये मॉन्टे कार्लो की है. सो इस पे जो प्रिंट है, जो स्लोगन है, जो एम्बॉस किया हुआ है, that's a very nice message, is the reason why basically he said he wanted to gift it to me. So the slogan says think happy, stay vibrant. Very good one. The future is not ours to see. Don't worry, if it's supposed to happen, it will be. Such a nice thought, right? So again, thank you Naresh for both these nice gifts, and I hope you all enjoyed this vlog. Like, share, comment, subscribe, you know the drill, and I'll come up with such nice videos for you all in the near future. So on this note, signing off. Bye bye, good night, and I hope you all had a great Sunday as I also did. हाय, इट्स मी अगेन. आई नो मैंने पिछले क्लिपिंग में आपको गुड नाइट बोल दिया था, बाय बाय बोल दिया था, लेकिन मुझे एक बात याद आई कि मैंने मेट्रो राइड ली. अब ये तो बताया आपको, आपने व्लॉग भी देखा पूरा, बट आई डिड नॉट टेल यू द फेयर और द रूट्स वट एवर. सो वी टुक द मेट्रो फ्रॉम डेक्कन. फ्रॉम देयर वी वेंट टू सिविल कोर्ट, शिवाजी नगर, एंड सिविल कोर्ट से हम गए PCMC. वहाँ पे हमने लंच किया एंड फिर सेम रूट हम रिटर्न आए. सो फॉर दैट रूट आवर टोटल टिकट कॉस्ट वॉज 84 रुपीज़. सो 42 रुपीज़ ईच पर्सन के लिए आता है, इंक्लूडिंग द एंट्री, आई मीन इंक्लूडिंग द रिटर्न जर्नी. द फैसिलिटीज़ एट द मेट्रो स्टेशन आर सुपर. मतलब जगह जगह पे एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स है, वॉशरूम्स आर एक्सेसिबल इवन फॉर व्हील चेयर एंड क्रच यूजर्स, एंड क्लीन है पूरा, स्पेशियस भी है. द मेट्रोज आर ऑन टाइम. अनाउंसमेंट्स है हर जगह, हर स्टेशन पे. वहाँ पे जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो टिकट काउंटर्स या बैगेज काउंटर्स के वहाँ होते हैं, वो दे वर सुपर हेल्पफुल. जैसे एयरपोर्ट्स पे वगैरह होता है वैसे हमको बैगेज चेक करना था, अपना हैंड बैग वगैरह. फिर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग लाइंस वगैरह थी, लेकिन मुझको लाइक दे सॉ दैट आई हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, सो मुझको पहले अंदर जाने दिया उन्होंने. एंड या दे वर ऑल वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. सो या ऑल इन ऑल इट वॉज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड आई फेल्ट रियली नाइस कि फैसिलिटीज़ अच्छी दी उन्होंने एंड इट्स वर्किंग. या समटाइम्स इट हैपन्स कि फैसिलिटीज़ दे के तो रखते हैं बट दे आर ओनली ऑन पेपर. यहाँ पे ऐसे नहीं है एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट टुडे. नाउ इट्स अ फाइनल बाय ऑल ऑफ यू. गुड नाइट एंड आई विल सी यू सून.